Hi guys, welcome back. If you are new here, my name is Tanya. Welcome to my channel. Please take a moment to subscribe and hit the bell icon so that whenever I post a video, you'll be notified and you don't miss my videos. So guys, today I'm going to create this Valentine look and which is going to be super easy and simple. So guys, if you want to know how to achieve this look, please watch the video till end and let's begin. So first I'm going to use this Nykaa Prep face primer which will blur my pores and fine lines. प्राइमर लगाने से हमारा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, तो मेकअप करने से पहले प्राइमर ज़रूर अप्लाई कर लें। आज का मेकअप बहुत ही इजी होगा। सो डायरेक्टली आफ्टर प्राइमर आई एम गोइंग टू यूज दिस लैक्मे 925 सीसी क्रीम विच इज़ इन शेड हनी। अप्लाई द सीसी क्रीम। आई एम यूजिंग दिस कलर बार ब्यूटी ब्लेंडर। इसको मैंने अच्छे से अपने अंडर आई एरिया पे एंड आईलिड्स पर अप्लाई कर लिया है और आप देख सकते हैं कि अच्छे से ब्लेंड हो गया है। नाउ आई एम टेकिंग दिस मेबेलिन फिट मी पोरलेस पाउडर एंड गोइंग टू सेट माय बेस। सो हम लोग अपनी अंडर आई एरिया को अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी क्रीज ना हो। इसको हम लोग अपनी आईलिड्स पे भी अप्लाई कर लेंगे। So today I am not going to contour my face to keep this look easy and simple. So now I am going to use this blusher which is from Europegirl cosmetics and also guys सारे product details description में mention है, so don't forget to check it out. So blusher apply करने के लिए आपको स्माइल करना है and you have to apply it in this way, in the upward direction. गाइस मैंने ब्लशर को अपने चीक्स पे अप्लाई कर लिया है एंड थोड़ा सा नोज पे अप्लाई कर लेंगे और फिर थोड़ा सा चिन पे। सो गाइस ब्लशर अप्लाई हो गया है एंड ऑलमोस्ट हमारा बेस मेकअप कंप्लीट हो गया है। सो आफ्टर ब्लशर आई एम गोइंग टू अप्लाई हाइलाइटर एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर। आई एम टेकिंग सम प्रोडक्ट ऑन अ फैन ब्रश एंड गोइंग टू अप्लाई इट। सो गाइस हाइलाइटर को मैंने चीक बोन पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे एंड थोड़ा सा चिन पे, क्यूपिड्स बो एंड फोरहेड पे अप्लाई कर लिया है। फॉर द ब्राउज आई एम यूजिंग दिस वेटनवाइल्ड रिट्रैक्टेबल ब्राउ पेंसिल एंड गोइंग टू फिल माई ब्राउज। Guys, after filling the brows, let's move on to the eye makeup. So guys, first of all, I am going to apply this red shade on my eyelid. इस शेड को हम लोग अपनी पूरी eyelid पे अप्लाई कर लेंगे अच्छे से। My look is going to be very easy for you all. You can see guys कि मैंने इस रेड शेड को अपनी पूरी eyelid पे अप्लाई करने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी दोनों आईलिड पे ये शेड को अप्लाई कर लिया है और अगर आपके पास ब्रशेस ना हो तो आप अपनी फिंगर से भी इस आई शेड को अप्लाई कर सकते हैं। नाउ टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव आई एम गोइंग टू अप्लाई वन शिमरी शेड एट द सेंटर ऑफ माय आईलिड एंड गाइस प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ आई एम टेकिंग दिस लाइट ग्रीन शिमरी शेड एंड शिमरी शेड्स को आप अपनी फिंगर से अप्लाई करें तो वो ज़्यादा अच्छे से अप्लाई होगा। इसको आपको बस टैप टैप करना है और ये अप्लाई हो जाएगा। गाइस कि ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और कितना इजीली हमारा आई मेकअप हो गया है। सो नाउ आई एम यूजिंग दिस हाइलाइटर अगेन एंड गोइंग टू हाईलाइट माय ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर्स। नाउ आई एम गोइंग टू कर्ल माय लैशेस। After curling my lashes, I am taking this Maybelline hypercurl mascara and going to coat my lashes well. So guys, after applying mascara, our eye look is complete and now moving on to the lips. I am using this Europegirl Cosmetics Liquid Matte Lipstick which is in shade G10.
now I am taking this Milani Make It Dewy setting spray and going to set my makeup. So yeah guys, this is my Valentine look. अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज गिव दिस वीडियो a big thumbs up and also comment down below अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो. You can share this video with your friends and family. So guys, for Valentine this look is super easy and glam. So if you create this look, please follow me on Instagram. The link is in description below and you can tag me there. And also guys, all product details are in the description, so don't forget to check it out. And guys, if you want to see my other videos, you can tap the I button above and watch. तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बगल में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए और कोई भी नया वीडियो आप मिस ना करें. So guys, thank you so much for watching and enjoy your Valentine. We'll meet you soon. Till then, take care. Bye guys.